friends, today we are here in front of you to present another videos. You can say it as a sequel to our first video, which was drug design and QSAR part 2. In the previous video, we have discussed about the basics of QSAR and drug design, and also the previous earlier approaches which were formulated to describe how QSAR works or how drug designing could be achieved. If you have not watched that video, please watch it. And those who have watched that video, they must remember that the last approach we discussed in that video was Hemet Approach. And now, after disapproval of that theory, Hemet theory, then came another scientist. The name of the scientist was Taft, and he gave another approach. And I should say that he continued the theory of Hemet approach in his works. And as you know from the previous video, Hemet approach was based on the theory that the hydrolysis of a substance is mainly responsible due to electronic parameters, that is the substance electronic parameters, in neutral medium. Okay. Taft continued his work and added another parameter. Taft said that the hydrolysis of a compound depends upon steric as well as electronic parameters. Overall, he said that basically the hydrolysis of a compound depends upon both of these parameters or both of these properties of that compound. And he carried out his work in different pH medium. If you remember, in the last video, we discussed the only demerit of Hemet approach was that he was not able to justify the hydrolysis of compounds in other mediums than neutral, and due to which his theory was discarded. But Taft, he studied hydrolytic behavior in acidic, basic as well as neutral medium, and he gave a postulate that in acidic medium, if you want to carry out hydrolysis in acidic medium, the acidic medium hydrolysis is purely responsible due to steric parameters or steric properties of that compound, whereas in basic medium, hydrolysis depends upon both steric as well as electronic parameters. Now here it is very much important that you remember these 2 points, very much important. Taft gave the postulate that in acidic medium only steric parameters are responsible for hydrolysis of a compound, and in basic medium a compound's hydrolysis depends upon both the steric as well as electronic parameters. And now here, if you see closely, he also made Hemet approach correct. How? As you can say that if acidic and basic medium both are mixed together, as you have well studied it in acid-base titrations, they are also known as neutralization reactions. If acid and base are combined, the medium pH or the pH of the medium gets neutralized as they both tend to cancel each other. Similarly, from this point of view, we can say that
acid and base are both neutralizing each other, both cancelling out the effect of each other, and the overall pH of the medium will become neutralized. Similarly, if you see closely, if acidic and basic both mediums are cancelling out each other, we can say that the steric parameter will also have no effect, as both are common in both medium. Steric property will have no use further if acid and base are both reacted together. And from this point, we can say that whatever pH medium we get, whatever the pH of the medium, the only thing which will govern the hydrolysis in that neutral medium will be electronic parameters. Quite cunning. The basic Taft approach was he proved his teacher Hemet correct and said finally that the neutral pH medium, if is used for hydrolysis of a compound, then only electronic parameters are responsible for its hydrolysis. And studying this, he just converted the equation of Hemet. As you can see over here, Hemet equation used Kx upon pH, ionization divided by hydrolysis. But he studied this behavior in acidic as well as basic medium. So the equation changed slightly, and this equation was then further known as Taft equation. Moving on. Finally came Hemet's approach, the most important of all the approach, as I have explained it in the previous video. This is the only approach which was quite fundamental in today's drug design studies. The first postulate which Hemet explained was that the dose of the drug reaching the receptor is of utmost importance. You must remember this. अगर एक ड्रग अपने रिसेप्टर तक प्रॉपर कंसंट्रेशन में नहीं पहुंच पाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका बॉडी में कोई प्रॉपर इफेक्ट आएगा. ये आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं एरिया अंडर कर्व, और बायोफार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रीचिंग द रिसेप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी ड्रग को हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हैंस ने. द कॉन्सेप्ट वाज ऑफ रैंडम वॉक. द रैंडम वॉक concept which was given by Hans, he explained that a drug has to pass several lipid aqueous barriers to reach its site of action. Quite simple, काफी सिंपल सी अप्रोच हमने दी थी. ये सब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि एक ड्रग को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने रिसेप्टर पहुंचने के लिए कई तरीके के बैरियर्स का सामना करना पड़ता है. अगर ये ड्रग अपनी एडमिनिस्ट्रेड साइट से, here this is the administered site, अगर अपनी एडमिनिस्ट्रेड साइट से अपनी एक्शन साइट तक पहुंचने में कई तरीके के लिपिड एक्वस बैरियर्स क्रॉस कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि उसका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से अनअफेक्टेड रहेगा. हमें मालूम है कि जो कंसंट्रेशन आपने शुरुआत में दिया था ड्रग के लिए, वो कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा. हो सकता है कि जो मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है हमारी ड्रग के लिए कि वो आके अपना एक्शन देगी, वो मिनिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन भी आपकी साइट ऑफ एक्शन तक ना पहुंचे. इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, आप सब लोग जीपैट की तैयारी कर रहे हैं
और जीपैट की तैयारी की स्टार्टिंग में तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था, धीरे धीरे आपके सामने बड़े बड़े बैरियर्स आते गए साल भर की पढ़ाई में। उन बैरियर्स को क्रॉस करने में आपकी एनर्जी गई, स्पिरिचुअल एनर्जी गई। अब यही एनर्जी आखिरी तक आते आते, मान लीजिए अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो बेटा जब एक्शन साइट आएगी, जब आपके एग्जाम का दिन आएगा, तब आप पूरी तरीके से यू विल बी रेंडर्ड हेल्पलेस। सो इट इज important to maintain our concentration till the end. And this was the concept given by Hans, which was also known as concept of random walk. And the second most important parameter which he gave in the subsequent postulate was he established a non-linear relationship between biological activity of the drug and its partition coefficient, or you can say lipophilicity. Here I have mentioned lipophilicity as log P. Basically, log P only signifies lipophilic nature of the drug, and he explained that the drug should have optimum lipophilic character. If the drug is purely hydrophilic, it is not going to pass, or it is not going to be absorbed. Gradually, as we increase the lipophilicity of the drug, we see that the biological activity also starts increasing. But we do not get a linear line or a straight line through and through. We know that after reaching an optimum concentration, the biological activity of the drug declines as the log P or lipophilicity is increased. So here Hans showed a non-linear relationship between lipophilicity of the drug and its biological activity. Because as you know, if the drug is too much hydrophilic, I've also explained it earlier, if the drug is too much hydrophilic, it's not going to be absorbed. If the drug is too much lipophilic, it is going to attach itself to the lipid membranes, phospholipid membranes, as you know it well, lipid membranes, and is not going to move forward. Moving on. The second postulate given by Hans was the attachment of the drug to its receptor site. बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। सबसे पहली बात ये थी कि भाई ड्रग अपने एडमिनिस्ट्रेशन साइट से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचे। अब जैसे तैसे आपकी ड्रग पहुंच गई और अच्छे कंसंट्रेशन भी पहुंच गई, आपने जीपैट की तैयारी करी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, स्पिरिट्स आपके हाई है, एनर्जी हाई है, और आप एग्जाम देने बैठे और सर्वर से ही आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ पा रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा और हमारे पास कोई इफेक्ट निकल के नहीं आएगा। तो उसी तरीके से अगर ड्रग किसी एक कंसंट्रेशन में अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच भी गई है, तो भी जरूरी नहीं है कि वो अपना एक्शन देगी ही देगी। ड्रग अपना एक्शन तभी देगी जब वो अपनी रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड होगी। अब हैंस ने कुछ पॉइंट्स दिए थे ये बताने के लिए कि ड्रग का अटैचमेंट अपने रिसेप्टर साइट से किन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब वो कौन से कारण हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी ड्रग को अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था, और ये ऑब्वियस सी चीज है, हम लोग ये चीज पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री या शेप ड्रग का, ड्रग की स्टीरियो केमिस्ट्री या ड्रग का शेप, जो मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के उसके शेप। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बल्की है, हमें पता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, स्टेरिक एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो ड्रग का मॉलिक्यूल है, जो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम बात करें, ड्रग का मॉलिक्यूल अगर बहुत ज्यादा बल्की है, तो हमें पता है कि एक प्रॉब्लम आती है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट। ये स्टेरिक हिंड्रेंस अगर है
तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर हाई एनर्जी होगी, टेंशन क्रिएट होगा तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका ड्रग प्रॉपरली अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता। और यहाँ से उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज बोली थी हेंस ने, जिसका यूज हम आज तक ड्रग डिजाइन में कर रहे हैं बेटा, कि ड्रग डिजाइन की स्टार्टिंग करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी मॉलिक्यूल की हम स्टडी कर रहे हैं, जो आप लीड मॉलिक्यूल के नाम से जिस चीज को जानते हैं, जो आगे चल के ड्रग कैंडिडेट बनने के लिए तैयार है, इस लीड मॉलिक्यूल की या ड्रग की मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो बेटा अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हमारा ड्रग प्रॉपर एक्शन नहीं दे पाएगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ड्रग के अटैचमेंट पे, कहां पे, उसके रिसेप्टर पे। एक और पोस्टुलेट उन्होंने दिया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि ड्रग के ऊपर प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली जो ड्रग के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर से जाके डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, इसमें मोस्टली आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, और यू नो दैट रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स बोथ आर प्रोटीनियस इन नेचर, जिनसे आपकी ड्रग बॉन्ड होती है। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली इंटरेक्शन, मोस्टली, पूरी तरीके से नहीं, मोस्टली ड्रग का अपने प्रोटीन से जो इंटरेक्शन होता है, प्रोटीन मतलब रिसेप्टर या एंजाइम कुछ भी हो सकते हैं, तो इन दो प्रोटीन से अगर ड्रग का अपना इंटरेक्शन हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो सकता है। तो हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसा कि आप जानते हैं अमीनो एसिड्स की सरफेस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और उस हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बहुत ज्यादा कमी है, तो हम जानते हैं कि हमारा इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीजें हेंस ने बोली थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ड्रग के अटैचमेंट पर, किससे, उसकी रिसेप्टर से या एंजाइम से। Finally, Hans gave us an equation in which log 1 upon C was the biological activity of a compound, and it dependent on these four parameters. Trust me, this is the accurate equation: K1 pi, K3 sigma, K4 ES, and K5. There is no constant as K2. This was the legit equation given by Hans. Properly, this K5, this constant was given by Dr. A.B. Day, and hence overall this equation is known as Hans and A.B. Day equation, where pi, K1 pi, here pi represents lipophilicity, which was given by Hans himself. K3 sigma, here sigma, as we have studied in the previous video, sigma represent electronic parameters, and we know that electronic parameters and its importance was given forward by Hemet. K4 ES, here ES represents electronic and steric parameters, and you all know that both these parameters and their importance was given forward by Taft. And finally, K5, this K5 constant sums up all the remaining properties or parameters of a compound. Some QSAR tools which are generally used for selection of substituents. The most important one is Craig plot.
It's a simple plot in which two physico-chemical properties, and specifically as you can see, as you have studied earlier, here in y-axis, both the y-axis, we have sigma, and sigma represents electronic parameters. And in x-axis, you can see pi is present, and pi represents lipophilicity. So here, Craig plot is a simple plot in which we have formulated or we have shown various substituents or groups like CF3, trifluoromethane, chloride, bromide, iodide ion, cyanide group, amide group, many substituents, and their arrangement according to the given two physicochemical properties like sigma and pi. Sigma here represent electronic parameters and pi again lipophilicity. One thing specific, all of you should note down that if this Craig plot is used for selection of substituents to develop a QSAR equation, अगर आप इस क्रेग प्लॉट का यूज करते हो बेटा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को सिलेक्ट करके अपनी ड्रग पे लगाने के लिए, नया ड्रग मॉलिक्यूल बनाने के लिए, लाइब्रेरीज बनाने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, then this Craig plot is also known as topless decision tree. Clear? Craig plots, when used for selection of different substituents, is also known as topless decision tree. Moving on. Some common points which are mostly asked or have been asked in NIPER and GPAT exams. A parameter known as COMFA, COMFA here, represents comparative molecular field analysis. It is generally a QSAR method for three-dimensional property determination. Remember this. Comparative molecular field analysis is a QSAR method which is used for three-dimensional property determination of a compound. Another one which is quite strikingly similar but different, quite different, is COMSIA, comparative molecular similarity indice analysis. And this is not a method, it is an actual QSAR parameter. It is an actual QSAR parameter which is a part of three-dimensional property of a substance. Remember this. And both these properties are generally used by many softwares, including SteriMol, which, as the name suggests, Steri for steric parameter. VLife MDS, it is another software. Schrodinger, a big software. All these softwares which are specifically designed for 3D QSAR determination or 3D QSAR model development, they both use these two approaches. Hope you found this video helpful. Please like us on Facebook and subscribe to our YouTube channel for more content. For free online test series, you can visit us on www.pharmasapience.com. Thank you so much.